Evening live show on DD1, and guess who we have with us right now? Well, we have a very special guest, Mr. VIneet with Bajpai. us, right? Mr. VIneet Bajpai, and he started at a very young age, and you can say now his company, of whom he is the founder and CEO. There is so much to say about him. It's one of the largest, the digital media companies of the country. Call him a business guru or a corporate trainer or a management strategist, whatnot. Let's talk to him and know more about him, about his books, which are released and which are so popular. Welcome, VIneet, to our show. Thank you very much. VIneet, at a very young age you started, 22. Yes. And from just 1400 rupees in your pocket. And now you are a founder and CEO of two big companies, which are the largest, one of the largest in the country. Sure. So how the journey has been? See, the journey has been very exciting, and thank you for your kind words when you introduced me. It's been very exciting, and you're right, we started with 14,000 rupees, which I had collected from my first job, and wanted to be an entrepreneur. And हमने शुरुआत करी थी अपनी दो रेंट पे कंप्यूटर्स लेकर, और दिल्ली में एक छोटा सा जनरेटर शेड था जहां पे हमने अपनी शुरुआत करी थी. हमारे पास एयर कंडीशनिंग या ब्लाइंड्स तक नहीं होती थी, पर उसके बाद से आई थिंक वी वर्क वेरी हार्ड एंड गॉड वाज काइंड, एंड टुडे माय कंपनीज मैग्नॉन सॉल्यूशंस एंड मैग्नॉन इंटरनेशनल आर अमंग्स द लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया कंपनीज इन इंडिया. तो उस छोटी सी शुरुआत से जहां हम दो लोग थे, आज हम 150 लोगों के करीब हैं. हमारे ऑफिसेज हैं दिल्ली और बॉम्बे में. हमें इंटरनेट हिंदुस्तान में टॉप 25 इंटरनेट कंपनीज में हमारी रैंकिंग हुई है. तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है, और ऑफ कोर्स मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है. हमारे साथ जो टीम है मैग्नॉन सॉल्यूशंस में, हम सभी साथ रहे, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हुआ. विनीत, बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट दे डोंट लाइक टू शेयर देयर सीक्रेट्स, कि वो तो कभी किस्मत पे कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी थी, बट यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इट्स लाइक फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू आर विलिंग टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन ऑल द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस. So tell us something about how that happened. See, I think this journey that I just described, what that did to me was that we of course made a lot of mistakes on the way. Yeah. ऐसा नहीं था कि बहुत स्मूथ राइड रही और हमने 14,000 से शुरू किया और हम 20 करोड़ का टर्नओवर करने लग गए और वो ऐसे ही हो गया. ऐसा नहीं था, बहुत सारी गलतियां हुई. We made a lot of mistakes, and it was during this journey that I realized that why should every new entrepreneur or why should every small business commit the same mistakes all over again and reinvent the wheel all over again? अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की अगर आप किताबें देखें तो द ग्रेट्स, जैक वेल्च, माइकल पॉटर, पीटर ड्रकर, आई लव देम ऑल एंड आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम देम. बट अगर आप देखें तो वो आपको सिखाते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी को और बड़ा मल्टीनेशनल बना दिया जाए. और दे टीच यू अबाउट क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड दे टीच यू हाउ टू डू $1 billion acquisitions. It's great knowledge, it's great wisdom, but how many of us can actually put it to practical use? बहुत कम. I think बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा जो इसको एक्चुअली एक प्रैक्टिकल यूज में डाल सके. तो आपको बहुत किताबें मिलेंगी जो $1 billion कंपनी को $10 billion की कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगी. बट आई रियलाइज दैट आपको बहुत कम किताबें मिलेंगी जहां आप देखें स्टार्टअप. एब्सोल्युटली एक 20 लाख रेवेन्यू करने वाली कंपनी को एक 20 करोड़ की कंपनी कैसे बनाया जाए. एक हाउसवाइफ जो एक बुटीक अपने घर से चला रही है पिछले 10 साल से और वो उसी स्केल पे काम कर रही है. वो 1 room ऑफिस जो 15 लोगों का था आज से 15 साल पहले और आज भी वैसा ही है. सो आई फेल्ट दैट there has to be a helping hand. There has to be someone who has to do thinking for these smaller outfits and handhold them and take them to the other side of the line. और अगर हम helping hand की बात करें तो आपकी पहली किताब पे आ जाए, building from scratch. जी, build from scratch. Build from scratch. Okay. So it is all about your journey. No, build from scratch. ये दोनों किताबें आप समझ लीजिए जैसे सीक्वल जैसी हैं. Build from scratch मैंने लिखी थी for someone who has no money, who has no cutting edge innovation, who has no business background, but एक फायर इन द बेली है और जो कोई एक अपना नया काम शुरू करना चाहता है. तो कैसे आप आइडिया जनरेशन से लेकर मार्केट रिसर्च करने से लेकर अपना बिजनेस प्लान लिखने से लेकर इनिशियल कैपिटल कहां से रेज करना है. सो मेरी पहली किताब थी कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो उसको आप कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रैक्टिकल गाइड. Very practical guide. It's a very down to earth, very practical, very shoestring budgets, kind of a book. जो ये दूसरी किताब है, द स्ट्रीट टू द हाईवे, ये ऑलमोस्ट एक सीक्वल है. अच्छा. जो पहली किताब है वो है कि आपके पास एक आइडिया है, आपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना ली. व्हाट आफ्टर दैट?
So the street to the highway, as the name suggests, is guides you कि आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या ग्रिटी, डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करें और एक सिस्टमैटिक ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, तो कोई भी कंपनी जो कस्टमर को ट्रू वैल्यू ऑफर करती हो, जिसका बिजनेस मॉडल इंटैक्ट हो, कोई भी कंपनी एक छोटी कंपनी से एक बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है. यू जस्ट नीड टू डू सम ट्राइड एंड टेस्टेड डिसिप्लिन strategies and tactics. So my book is, a and this was sold out before it got launched, right? Yeah, that was very overwhelming. Very overwhelming. I think none of us expected it. My publisher, Jayco Publication House, they didn't expect it. I didn't expect this to happen. But I think it's very overwhelming. We sold off the first edition, even before the book hit the retail stores, and that's a lot of encouragement. And that also probably is a sign that I truly believe India is a powerhouse of entrepreneurial talent. It's a power keg waiting to uncoil and explode. If we are able to, in terms of the private sector, और अगर हमारी गवर्नमेंट जो कि बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वी कैन क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट, आप देखेंगे दैट आई थिंक वी विल आउट परफॉर्म एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड. विनीत, अगर हम बात करें आपकी ये जो किताब अभी आई है मार्केट में, द स्ट्रीट टू द हाईवे, एंड it talks about, like, it shatters the myth, like destiny is there for only few who want to become big, for a few big entrepreneurs. And you in this book talk about like how you can also be a big entrepreneur. So the tips are there and the exercises are there. So people will read it, of course, but can you give few tips to the people who are just budding entrepreneurs? Of course. जैसा आपने कहा कि एक किताब वो मिथ शैटर करती है कि आई ट्रूली बिलीव दैट गॉड हैज मेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वेरी इक्वल, एंड वी ऑल कैन अचीव स्टेलर ग्रोथ स्टोरीज इफ वी आर गिवन द राइट गाइडेंस एंड द राइट एनवायरनमेंट. सो जो सबसे पहला एक मिथ होता है कि इफ यू हियर द बिग नेम्स ऑफ बिग सक्सेसफुल कॉर्पोरेट सीईओज, तो आपको लगता है कि शायद उनमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है. ऐसा नहीं है. उन्होंने वही चीजें बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड तरीके से करी जो शायद हम और आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा. मेरी किताब में एक चैप्टर है विच इज ऑन पीपल. आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर दैट अ कंपनी इज नॉट मेड सक्सेसफुल बाय एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ब्रांड और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी. इट इज मेड सक्सेसफुल बाय इट्स पीपल. एंड सो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड पीपल, which is, I think, the 4th or the 5th chapter. Okay. And the subtitle below that chapter is, are you still the CEO, CFO, CTO, CIO and CMO of your company? Okay. Now what this means is, अगर आप देखें तो जब कोई आदमी एक छोटी सी कंपनी शुरू करता है, एक एंटरप्रेन्योर छोटी सी कंपनी शुरू करता है, तो शुरू में वो बहुत मेहनत करता है. मेरी जब पहली किताब आई थी तो मेरा एक टेलीविजन इंटरव्यू हुआ था. उसमें मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या रोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. तो आई टोल्ड हिम कि मैं अकाउंटेंट भी हूं, मैं सेल्समैन भी हूं, मैं रिसेप्शनिस्ट भी हूं, सारे काम मैं खुद ही करता हूं. A lot of entrepreneurs do this, but there is a difference in which how you work in an entrepreneurial outfit and how you transform it into a larger company. जो entrepreneur सारी चीजें पहले खुद करता है, he has to realize that as time progresses, he needs to start decentralizing and giving it to other people. Because the rules of success change. आप अगर सारी चीजें अपने पास खुद ही करते जा रहे हैं, and then देखिए इसमें कैसे एक vicious cycle सी बन जाती है. एक एंटरप्रेन्योर कोशिश करता रहता है और वो सारे काम खुद ही करता रहता है बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, बट उसको रिजल्ट्स नहीं आते. ही स्टेज वेयर ही इज, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज नॉट डिसेंट्रलाइजिंग, एंड ही रियलाइजेस और ही और शी थिंक्स दैट शायद मुझे और करना चाहिए, एंड दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर. And in fact, that hard work, instead of propelling the company further, makes the entrepreneur the biggest roadblock to his company's growth. So, so these are the kind of small practical tips that this book will tell you that, look, this is the right time when you need to let go of control. So, elbow grease is good, but too much elbow grease can wear you out. Absolutely, absolutely. विनीत, आपने एक छोटी सी बात कही कि बड़ी कंपनियों को देख के हम डर जाते हैं और बड़े बिजनेसमैन को देख के भी हम सोचते हैं कि इनमें कुछ खास है. और आपने अपनी बुक में कहा है कि कोई भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है और बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो आपका भी मुकाबला, जब आपने बहुत छोटी कंपनी शुरुआत की, तो मुकाबला बड़ी और बेस्ट कंपनी से था. तो उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके? देखिए, उसके लिए तो मैं बिकॉज यू ऑल्सो आई थिंक वर्कड विद अ वेरी बिग कंपनी, इंटरनेशनल कंसर्न, बिफोर आफ्टर योर MBA, राइट? Yes. Okay.
Yes, so like you rightly said, I finished my MBA, then I was working with General Electric. And मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, and I always believe that, that's where my real training ended. That's where I learned the final chapter of what I should have learned, as a manager. तो वहाँ पर कैसा रहा आपका, जब आप बहुत छोटी कंपनी के एक मालिक थे और आपका मुकाबला सबसे बड़ी कंपनियों से था, तो वहाँ से कैसे, क्या क्या मुश्किलें आई और क्या टिप्स थे आपके पास? देखिए, सबसे अच्छी एक्साइटिंग बात होती है जब आप छोटी कंपनी होते हैं और आप बड़ी कंपनीज के साथ compete कर रहे होते हैं कि it's always the David and Goliath story. If you lose, nobody minds. You ought to have lost. But if you're such win, a small. But if you win, it's you've killed the giant. Yeah. So we've been through several such occasions. In fact, जब हमने Ministry of Finance के साथ काम शुरू किया था, for a long period of time we were the official digital partner to the Ministry of Finance. And जब हमने वो काम शुरू किया था, तो we were competing with the best in the business, and we won the order. And a lot of people were surprised that such a small company. But I think what we were able to create here was, we were able to create a very solid team. हम जो 4-5 लोग थे जो हम आज भी साथ हैं, हमने एक ऐसी टीम क्रिएट करी थी, एंड वी शेयर्ड अ कलेक्टिव ड्रीम. सो आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है, आई थिंक विलियम ब्लेक ने अपनी कविता में लिखा है दैट इफ अ बर्ड ट्राइज टू सोर टू हाई ऑन हर ओन विंग्स, इट वोंट बी एबल टू सोर टू हाई. सो यू हैव टू नो दैट अगर आपको इतनी बड़ी कंपनी से compete करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपनी एक कोर टीम पर विश्वास रखना होगा. तो ये बातें तो आगे भी होंगी और आपकी बुक हम पढ़ेंगे भी जिन्होंने नहीं पढ़ी. बुक रिलीज फंक्शन पे चलते हैं जो कि बीत गया. I would really describe it as going to the superhighway, which is where he's going to reach after this in perhaps his third book. That journey he has also been sharing with me as we have spoken over a period of several years. And my last, but I think perhaps the most important reason for being here today is that this young man's focus, his grit and his determination is something that I find both very attractive and a little unusual. And I think that if this book and the journey that it encompasses is something that can be benefited, that can benefit many more people beyond just the English language. And I was saying to Mr. Sharma just now that I think it deserves to be translated into other languages, and not just Hindi. I think it will have a great market in Malayalam, in Telugu, in Tamil, and many other languages. I think that it would, as a result, this superhighway would benefit many hundreds of thousands of people. Because sometimes you might think that a book is launched on a particular day and is forgotten. But if a book has its enduring qualities, that book just goes on and on and on. There are many books today how to be an entrepreneur, and many how to run corporations. However, there are relatively few books that guide entrepreneurs to become corporations. VIneet book does exactly that. He opens a window of possibilities for each reader and then inspires them into action. Let me give an example. Technology is one of my really weak points. I am a little scared of technology because it's too advanced, too fast. And I was reading chapter 5. Information technology is for SMEs, the small, medium enterprises. However, I was reverted by the chapter. It was written with consideration for people with little technology background. Over a couple of pages, he opens the reader's minds to all sections of business that could be significantly transformed by technology solutions. As soon as I go back, my publisher and I would be working on a program to transform our editorial into production process.